Uh, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज फाउंडर RNTalks रंजीता घई। और आज हम सब आपके लिए एक बहुत ही हीरोइक पर्सन से मैं आपको मिलाने जा रही हूँ। दो दिस इज अ पोस्टह्यूमस अवार्ड being given to engineer Jaswant Singh ji, and but we have his son Dr. Sarpreet Singh Gill over here, and जो जसप्रीत सिंह गिल जी के हीरोइक कारनामे हैं वो अभी एक मूवी में भी बनने जा रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड रादर वी आर गोइंग टू हियर द स्टोरी, नो डिस्कशन दिस टाइम, जस्ट वी आर गोइंग टू हियर द हिस्टोरिक स्टोरी. क्या किया था उन्होंने एंड इतने सारे लोगों की जान बचाई थी which was beyond human capacity. So I invite his son Dr. Sarpreet Singh Gill over here on the show to tell us what happened on that fateful day. So good afternoon Dr. Sarpreet, and I'm so happy आप हमारे पास आज आप आए हैं डॉक्टर जसवंत सिंह गिल, सॉरी लेट इंजीनियर जसवंत सिंह गिल जी के लिए. एंड आई वुड जस्ट लाइक माय ऑडियंस टू फोकस इन द बैकग्राउंड. डॉक्टर सरप्रीत सिंह के पीछे देखिए, वो जो शख्सियत वहां पे हैं वो है हमारे इंजीनियर डॉक्टर जसवंत सिंह गिल. ही दिस इज अ पोस्टह्यूमस अवार्ड, and in his lifetime he had saved the lives of 65 coal miners जो नीचे फंस गए थे. आपने मूवीज में तो बहुत देखा होगा, अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा नीचे जा रहे हैं, कोल माइनर्स जो फंसे हुए हैं उनको बचा रहे हैं, बट वो सब पिक्चर है, वहां पे शॉट्स है, रीटेक्स है, सब प्लान स्ट्रैटेजी है. बट यहाँ जो हुआ था, there was nothing planned about it. This was a major accident and एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी होती होती बच गई 65 coal miners. Am I right, Sarpreet ji? Yes, ma'am. The number of people. Yeah, 65 coal miners. And आपकी थोड़ा लाइट कम हो गया आपके फेस के ऊपर. मेरे चेहरे पे वैसे ही लाइट कम. I think I'll बैक पीछे की लाइट जला देता हूँ. आप ऑन कर लीजिए. So 65 coal miners were saved that day just because of the late engineer Jaswant Singh Gill ji. He had such presence of mind that he had created a capsule, and that is why he was known as Capsule Gill. एंड बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं सिर्फ सवाल करूंगी और सरप्रीत जी हमारे को बताएंगे, पूरी कहानी सुनाएंगे एंड उस जर्नी में वापस लेके जाएंगे क्या हुआ उस दिन. सो सरप्रीत जी, व्हाट हैपेंड दैट डे एक्चुअली? Well, this was the morning of 13th of November 1989 when my father, who was newly appointed to a new area, so he had left his home and morning time in his official car, and he was going to join this new area for the first time. Well, like first day he was going to join, and the distance was almost 70 kilometers. जहाँ से ये निकले थे और जहाँ इनका ऑफिस, न्यू ऑफिस था, the distance was 70 kilometers. तो जब ये घर से निकले तो थोड़ी देर बाद अंदर इंटीरियर रोड से he touched the GT road. This is in Raniganj, West Bengal. So he was a coal mining engineer. So he was at that time posted over there. जब वहां निकले तो there was a traffic jam, and jams in those times 89, the roads were not very wide, the number of trucks and many other things, and West Bengal was famous for jams, broken roads and everything. So it still is, don't worry, it still is slightly better. Slightly. So अब क्या है कि he was caught in that jam, and somewhere in the background he heard the hooter of mines rescue van. Just like we have ambulance, just like we have fire brigades. So the mines have their own coal mine. Coal India Limited has its own rescue setup. So he heard the hooter. So he told his driver के भाई उतर के जाओ, फटाफट पता करके आओ कि वैन को कहाँ जा रही है और क्या हुआ है. तो the driver went and he came back in and he said कि सर यहाँ पास में एक
माइन है महावीर। तो वहां पे कुछ तो एक्सीडेंट हुआ है, और अभी तो इनको भी नहीं पता, क्योंकि इनको सिर्फ वहां से बुलाया गया है। एग्जैक्ट एक्सीडेंट व्हाट हैपेंड अभी नहीं पता। हम्म, So then my dad got down, and most of the truck drivers were at that time Sardarjis and mostly from Punjab. So he spoke to them. He spoke to the ASI कि भाई थोड़ा आगे करो, थोड़ा पीछे करो, इस वैन को निकलने दो, इट्स एन इमरजेंसी वैन. So they managed, and somehow it was uh, just for everyone's information. 13th November 1989 was Guru Nanak Dev Ji's birthday. मतलब but गुरुपुरब था उस दिन. हम्म, और मेरे फादर, though he was a religious man, he was not much of a person who would go to Gurudwara or anything. He would rather be at work was his prayer, मैं काम ही मेरा था that time. But उस दिन कर्म उन्होंने ही किसी का, उनकी सेवा थी जिसको कहते हैं। बिल्कुल, तो वो सुबह कर्म ही उन्होंने, उनकी पता पूजा। नहीं उस दिन उनके मन में क्या आया, he said कि आज ना मैं गुरुद्वारे जाऊंगा. एंड वो जब वहां पहुंचे, वो माइंड रेस्क्यू वैन को जैसे उन्होंने थोड़ा बहुत करके उसको निकाला, तो पता नहीं मन में क्या आया, ड्राइवर को बोलते थे यार इसके पीछे लगा ले कार. So, you know, it's like he is posted 70 kilometers away somewhere else. He has no responsibility of this area. He doesn't need to go there at all. And but still, he was taken there. He always said I was taken there. He didn't say I went. So once he reached, being a senior officer at that time he was the rank of additional CME, which is like general manager, one of the very senior posts of Coal India. He was almost 50 years old. तो वहां पहुंचे, तो he said कि भाई मुझे अब जब हमने देखा, तो we could make out there has been some sort of a flooding incident जिसमें some workers are trapped. So then he spoke to the officers over there, and the officers then appraised him of the whole situation कि सुबह की शिफ्ट 4 बजे 269 or 70 workers had gone down in the shift in the mine, and mines work 24 hours, they don't stop working. So जब वो दो लिफ्ट्स थी, वो दोनों लिफ्ट्स में जब वो नीचे माइनर्स गए सुबह 4 साढ़े 4 बजे, तो एट अराउंड 8 o'clock और 7:30 समथिंग हैपेंड, देयर वाज अ ह्यूमन एरर, जिसमें कि एक कोल पिलर था जिसको मार्क किया था कि इसको ब्लास्ट नहीं करना है, क्योंकि दिस वाज एट अ डेप्थ ऑफ 330 फीट जब यहाँ काम चल रहा था. देयर वाज अनदर कोल लेयर at 110 feet which was already taken out. That coal was totally taken out, so वो खाली हो गया था, and it was filled with groundwater. And there was a small rivulet passing by, तो उसका पानी भी सीप कर करके it had filled up that 110 feet वाला जो पूरी जितनी सीम थी वो फिल हो गई थी. So it was very clearly marked कि this area is not to be worked, no blasting, no cutting, nothing. But somehow something happened, there was a human error, and उसका जो सरदार था, माइनिंग सरदार, उसने वहां पे ब्लास्ट कर दिया. As soon as the blast happened, that whole pillar collapsed, and that millions of liters of water, which was at 110 feet, that just dropped straight down into their chamber where they were working at 330 feet. And that was like worse than you can say a tsunami, because एक तो ऊपर से पानी गिर रहा है like a waterfall, unlimited amount of water. So the jitne to workers, they could rush to the lifts, they immediately ran left, right. There were two lifts, and many of them went up, but 71 miners could not make it. And once the lifts went up, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो शाफ्ट्स में पानी भरना शुरू हो गया. जिस शाफ्ट में लिफ्ट चलती थी, उस शाफ्ट में पानी भरना शुरू हो गया. एंड बाय द टाइम दे केम आउट, उन्होंने नीचे देखा तो द शाफ्ट्स वर ऑलरेडी 40 feet डीप इन वाटर. सो द शाफ्ट्स कुड नॉट, द लिफ्ट कुड नॉट गो डाउन अगेन. एंड वो obviously the number of people who came out were counted, the number of people who had gone down they already knew, so the difference was coming to 71. So 71 miners were not still there. And somehow it so happened that that mine, Mahabir Colliery, was the first mine in India where intercom system was introduced. That was the first mine. तो वहां का जो माइनिंग सरदार था, he picked up the intercom
and the upper area man picked it up and he said, "Hum hai." That was his word, "Hum hai." And then it got disconnected because pani aa gaya. अब हम है can be one person, हम है can be two people, हम है can be 71 people. So चाहे वो एक है, चाहे वो 71 है, it is the duty of Coal India Limited that they have to rescue their people. Very true. So उसमें क्या हुआ कि ऑब्वियसली जब वहां पहुंच गए, सब आ गए, सीनियर ऑफिसर्स भी आ गए, वहां के लोकल पॉलिटिशियंस भी आ गए, लोग कट वहां के जमा हो गए, बिकॉज 71 फैमिलीज, उनके आगे फैमिलीज, उनके बच्चे, उनके रिलेटिव्स, so almost 25,000, 30,000 people gathered. Now they wanted to come up with a plan कि अब इनको, अगर हम एक आदमी है या जितने भी हैं, इनको हम कैसे सेव करें. So इसमें 4 different plans were made. One was कि जहां पे वो फंसे हुए हैं, हम एक डिस्टेंस से विल स्टार्ट cutting a decline so that it reaches 330 feet where they are stuck, and we can take them out. And they calculated that it would take 6 months. So obviously they were not going to stay alive for 6 months. So the second So was 6 months. Mane, yeah. idea तो हाँ, something आइडिया has to be से ये done. नहीं है. Right, true. And when 30,000 people are standing around, you have to Hmm. show them you're doing something. So that was one idea. So वो immediately start हो गया. वो 2 किलोमीटर पीछे से they started cutting. तभी, और the second idea was कि जहां से पानी नीचे ऊपर 110 फीट से नीचे गिरा है, उस होल को प्लग कर दे और उसी से हम नीचे जाके उनको ले आए. तो अब उसको प्लग करने के लिए देयर वाज एक लेदर बेल्ट्स आती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लेदर बेल्ट्स होती हैं. मतलब द माइनिंग यूजेस सम इक्विपमेंट्स व्हिच रेस्ट ऑफ अस हैव नेवर सीन एनीवेयर. They have strong equipments, they have the best equipments, they have the biggest equipments, they have trucks जिसके नीचे कार्स खड़ी हो जाती हैं. So बहुत it's a basically a world of its own. तो उन्होंने क्या किया, वो लेदर का जो बेल्ट थी उसको उन्होंने क्रेन से लोअर किया. As soon as it reached that point जहां से पानी निकल रहा था, उसने जब हिट किया उस बेल्ट को, that belt actually broke. Something which could not be broken by maybe even dynamite. वो उस पानी ने उस बेल्ट को तोड़ दिया. So that means कि वो idea would not work because the pressure of the water, the stones and everything else that was coming along with the water was too much. Now the third idea was कि हम इसको एक तो एक्सकवेशन का प्लान था, एक ये वाला प्लान था, तीसरा प्लान था कि I don't know, some another funny plan they had, something which would never work again. So my father, he spoke to his senior officers over there and he said ki I have read while we were in mining college and mining school, Indian School of Mines Dhanbad, which is now IIT ISM Dhanbad. So, but that was at that time the only school of mining dedicated to mining in India. Even today, as a mining school, it holds the most third position in the world. Oh, It's number 3 in the world. So वो he said हमने वहां पढ़ा है कि there is a method कि जिसमें हम एक स्टील कैप्सूल टाइप, जैसे खाने वाला कैप्सूल होता है, उस right. टाइप एक बड़ा स्टील का कैप्सूल बनाए और उसको एक बोरहोल बना के उसमें हम वो स्टील कैप्सूल को लोअर करें और वहां पे जहां वो फंसे हैं वहां से हम उनको लिफ्ट करके बाहर ले आए. तो they started laughing. They were like, अरे ये इतना 2-3 स्क्वायर किलोमीटर जगह है, तुम उनको ढूंढोगे कैसे कि वो कहाँ पे है. तो he said कि देखिए, मैं आप लोग अपना काम कर रहे हो ना, आप करो, don't, I'm not going to interfere in your work, let me try this. So they said, yeah, कर. And it was like for a joke, करो, बनाओ, Hmm. क्या तुम बनाना है भी तुम बना लो, देखिए. मैंने सब हाँ, कर रहे हैं, तुम तुम भी भी कर अपनी. लो, हाँ तुम कर लो. वो और वही ना कि बोले सरदार जी जबरदस्ती आ गए हैं, सरदार जी. एंड 89 वाज लाइक द बैड टाइम फॉर द सरदार जी. सो Yes, yes. ये तो जबरदस्ती नंबर बनाने आ गए हैं, इनसे क्या होगा, ये वो है ना. ऑल्दो पीपल न्यू कि गिल, इंजीनियर जसवंत सिंह गिल, wherever he goes, that area becomes like a gold mine
फ्रॉम अ कोल माइन इट बिकम्स अ गोल्ड माइन. सो Right. वो उनको पता था, बट ये एक चांस था कि जहाँ पे इसको इसको नीचा दिखाना है, तो चांस मिल गया ना. तो जैसा Hmm. ही सेड कि देखो भाई, लेट मी डू माय वर्क, आप अपना करो, मैं आपके किसी काम में इंटरफेयर नहीं करूंगा. सो व्हेन ही गॉट द परमिशन, ही कॉल्ड द सर्वेयर, and he himself was good at surveying, being a manager and like being a good officer. He himself was very good at surveying. So he got the surveyor who was also a very good surveyor in that Okay. area. So they both, they ग्रिड वर्क किया, उन्होंने ग्रिड वर्किंग किया कि भाई यहाँ से हमारी अंडरग्राउंड माइन कहाँ जा रही है, उसका किस तरफ इंक्लाइन है, किस तरफ डिक्लाइन है, ये लोग कहाँ से गिरे होंगे, पानी कहाँ से आया होगा, एंड अप्रोक्सीमेटली राइज साइड किधर है जहां अभी पानी नहीं गया होगा, क्योंकि पहले पानी लोअर साइड पे जाएगा, वो पूरा भर जाएगा, देन इट विल कम स्टार्ट कमिंग अप टू द राइट साइड. सो दे मार्क्ड 3 पॉइंट्स कि ये these are the places there where the possibility is 1 2 3. सो द फर्स्ट जहां पे थी वहां पे उन्होंने 2 इंच बोरवेल किया. वहां 2 इंच बोरहोल किया और टच किया नीचे गैलरी में. उससे इन्होंने एक रस्सी छोटी से एक टॉर्च नीचे भेजी, एंड वो टॉर्च जैसे नीचे गई, समवन कॉट इट. सो देयर फर्स्ट आइडिया वाज करेक्ट कि यहाँ पे है वो एग्जैक्ट, बुल्स आए. हाँ, सो हाँ. now the next thing was they sent some water, some juice, few biscuits, and then they sent in a note कि like आप लोग कितने लोग हो. तो उसमें उन्होंने लिख के बताया कि we are 65, 6 have already drowned, they could not make it, and we are almost going to die because the water is rising, the air oxygen is becoming less and less, and the upper area is subsiding because वो ऊपर का पूरा पानी जहाँ था वो पूरा खाली हो गया, तो वो वो सबसाइड कर खराब रहा था. करेगा अब, हाँ. वो कर रहा था, they could see the roof moving, they could see the roof moving कि ये collapse करेगा. So sir, we are ready for I'm death. getting goosebumps over here. आपके सुन के ना, I can just visualize. I'm really getting goosebumps. Please continue. So my dad was like, okay, now अब कुछ करना तो है. So सबसे पहले तो ही ऑर्डर्ड बिग, अपना जो बोरिंग के लिए क्रेन्स आती थी वहां पे. सो ही गॉट द बिग रिग्स हायर्ड, कंपनी की होती थी, फटाफट लेके आए. तो उसमें क्या था कि फॉर अ पर्सन, सिंगल पर्सन टू गो डाउन इन अ कैप्सूल, the bore had to be at least 22 inches in diameter. The problem which came was that India में at that time the biggest cutting bit was 8 inches. So अब क्या करना है? So they started working on that. They started the bore, पहले 8 इंच का बोर किया उन्होंने, फिर वो जो कटिंग बिट्स होती हैं और दूसरी कटिंग बिट्स तोड़ के उसके ऊपर वेल्डिंग की, उसको फिर थोड़ा बड़ा करके उन्होंने 14 इंचेस किया, फिर उसके नीचे प्लेट्स लगा के, स्टील प्लेट्स लगा के उसके ऊपर कटिंग बिट्स लगाई, फिर उसको अराउंड 20 किया, एंड इसी से नेक्स्ट they reached 22 inches. Once they reached 22 inches, in the meantime, he had drawn up the plans and everything कि ये इस टाइप का कैप्सूल मुझे चाहिए. फटाफट वहां पे पास में there was a factory called नियामतपुर सोदपुर फैक्ट्री, वो कोल इंडिया में उसका काफी काम होता है. प्लस वहां पे एक बांसल्स करके, दे आर अ वेरी वेल नोन ग्रुप ऑफ पीपल फॉर हैवी मशीनरी एंड ऑल. तो इन्होंने मिल के पहले एक कैप्सूल बना के भेजा विच वाज रिजेक्टेड, सेकंड बना के भेजा, दैट वाज रिजेक्टेड, देन दे सेंट अ थर्ड which was selected. Okay, yes, this is the right type which we need. This is the prototype which we need. This is the one which will go down safely, most safely, and this is the one which we can use. अब जी ये करते करते 13 तारीख की सुबह जब ये वहां पहुंचे हैं, ये सब करते कराते 22 इंच का बोरोल करते, वो कैप्सूल बनते बनाते 15 तारीख की रात हो गई, 11 साढ़े 11 बजे तक. बाप रे. तो अब साढ़े 11 बजे तक इन्होंने सब रेडी कर लिया. अब वो जो बोर इन्होंने 22 इंच का किया था, नॉर्मली क्या होता है कि बोर को लाइन कर देते हैं विद स्टील और समथिंग सो दैट इट डजंट कोलैप्स, बट टाइम था नहीं. दे वर एब्सोल्युटली रनिंग अगेंस्ट टाइम. दे वर फाइटिंग द बिगेस्ट एनिमी, नेचर. नेचर से बड़ा एनिमी या फ्रेंड कोई नहीं है. एंड दे वर फाइटिंग द बिगेस्ट एनिमी, नेचर, बिकॉज वाटर, एयर,
लैंड। तीनों उनके अगेंस्ट थे, तीनों अगेंस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया कि भाई सब रेडी करके, सब कुछ करके, उसको लिफ्ट, एक बड़ी हाइड्रोलिक लिफ्ट लेके उस पर हैंग करके, उसको ट्राइपॉड लगा के, उस पर लगा व्हील लगा के उसको हैंग किया उन्होंने कैप्सूल को। एंड एक उसको ड्राई रन दिया, नॉट टू 330 फीट, बट सिर्फ 200 फीट तक ड्राई रन 2-3 बार दिया कि ये ठीक चल रहा है उसको। हाँ, ठीक चल रहा है। सो at around 2 p.m., 2 a.m., 15th night, 16th morning, 2 a.m., two boys, young boys, who were sort of rescue trained, they had been assigned कि once everything is ready, you guys will go down and हम्म। you will help in rescuing those people, bringing them out. तो उनको आवाज दी गई, and they had already disappeared. They just ran away because no one wants to, मौत के कुएं में कोई नहीं छलांग मारना चाहता। हाँ, मैं समझ सकती हूँ बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ लाइक ये पहली चीज़ तो ये किसी ने की नहीं, ये नहीं, दूसरी ये ट्रायल है, तीसरा बिल्कुल एवरीथिंग जैसे आपने बताया ना लैंड, वाटर, एयर एवरीथिंग वर्किंग अगेंस्ट और बिल्कुल तीसरा फिर इंसान कहता है नीचे तो जो मर ही रहे हैं, मैं क्यों जाऊँ मरने के लिए लाइक ट्रायल हो सब मैं क्यों अपनी गर्दन फँसाऊँ, हमारे पास तो ज़िंदगी बची है तो छोड़ो। बिल्कुल। सो सो उस टाइम क्या हुआ कि मेरे फादर ने चेयरमैन को बोला कि लिसन सर, द पर्सन हु गोज डाउन टुडे, he has to be mentally fit. He said yes. Physically fit, yes. He has to be trained as a rescue person. He said yes. He said he has to be administrative. He has to control those people who are down there. He said yes. वो So ऐसे मेंटली चार पांच, कितने वो होंगे, आई कैन जस्ट इमेजिन उनकी क्या कंडीशन होगी, 3 दिन से नीचे हैं। बिल्कुल। तो he said कि भाई a person who goes down there has to be much stronger than the people who are down there. So he said Right? yes. He said then I am going down. And as soon as he said I am going down, the chairman, his face became white. He said no, no, I cannot, I just cannot मतलब कि क्या बोलते हैं, लूज, सीधा ही बोल दिया उसने, आई कैन नॉट लूज सच अ सीनियर ऑफिसर। तो माय डैड वाज लाइक ओके, एक पेपर लाओ, व्हाइट पेपर, आई एम गोइंग डाउन एट दिस टाइम, यहाँ पे मेरा साइन करा दो, अगर मैं सुबह नहीं आता, इफ आई डाई ओवर देयर, तो मेरा रेजिग्नेशन डाल देना कि मैं जाने से पहले रिजाइन कर गया था। ओ मैं आई एम नॉट एन ऑफिसर, आई वेंट एज अ ह्यूमन बीइंग टू सेव अदर ह्यूमन बीइंग्स, आप मेरी रेजिग्नेशन अभी साइन करा लो, इस टाइम पे साइन करा लो। देन ओके। उसके बाद थोड़ा सा दे रिगेन्ड देयर कंपोजर एंड ऑल के चलो ओके। हम्म। तो देन द चेयरमैन सेड वन थिंग, the person who goes down today in this capsule, his name will be written in इन golden हिस्ट्री letters in the history of coal mining, not only in India, but ऑल in the ओवर द world. वर्ल्ड। Then my dad was like, oh, okay. So that means वो तो उनको दिमाग में ही नहीं आया था। आई थिंक उस टाइम पे ही वाज़ सो फोकस्ड इन he was मैंने a किसी very भी तरीके focused से man. इनको निकालने के लिए कि जब बस वो बस लड़के भाग गए, ही सेड टू हेल विद एवरीबॉडी, मैं ही जाता हूँ। मैं ही जाऊंगा, बस मैं ही जाऊंगा। मैंने करा कि He एटलीस्ट said, हाँ, लेट मी he गेट said देम it's my आउट। baby, मैंने किया everything, अब मैंने आपको कंसीव करके दिया, मैंने बनवा के दिया। Of course there was a big team behind it, but I am the face of that team, so I'll go. तो चलो सब चीज तैयार हो गया, उतनी देर में वहां पे at those times there was दूरदर्शन and there was BBC, और कुछ हुँ, नहीं था। तो दूरदर्शन वालों ने अपने सवाल जवाब शुरू कर दिए, बीबीसी वाला आया तो बोलता है कि सर, व्हाट इज द रिस्क रेट? The dad is like, risk rate what? The risk rate is nothing. The risk rate is just 1.5%. He said, "Huh? ये कैसे? What is this calculation?" He said, "See, 65 people are already trapped. I am going down. Will be 66. If we all come out 100%, if I also die with the 65, it is 1 out of 65, 1 out of 66, which makes it 1.5%. So the risk is only 1.5%. The rest, तो रिस्क है ही नहीं, दे आर ऑलरेडी देयर। उनका तो पता नहीं वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे, मैं तो सिर्फ एक ऐड हो रहा हूँ ना, 65 से 66 हो रहे हैं। So he's like, you can say such things at this time? He said, look, what's wrong with the time? It's an absolutely fine time. We can talk anything. और फिर वो, where were you born and this and that and like, so he's like, are you planning to write my obituary tomorrow?
वो नहीं 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 सर, ऐसा नहीं कुछ. तो अगेन द चेयरमैन गिल, दे गिल, दिस इज अ वेरी बिग रिस्क. मैं यार, आई कैनॉट टेक सच अ बिग रिस्क. बट डैड सेड, लिसन सर, फॉर योर कॉन्फिडेंस आई विल टेल यू, we'll have a cup of tea tomorrow. I'm going down. रात को 2:34 a.m. he got into the capsule, and the capsule was, lowered like this with a steel rope. The steel rope was going down. A steel rope has very huge amount of torque. It's tight, totally tight. So as it goes down, as it lowers, the torque releases. So अभी वो 15 फुट गए होंगे, 20 फुट, तो वो जो उसका कैप्सूल था, इट स्टार्टेड रोटेटिंग रोटेटिंग एंड देन इट वेंट फुल रोटेशन, एंड देन इट वुड स्टॉप, एंड देन इट वुड स्टार्ट इन एन एंटी क्लॉकवाइज बैड. So that was like that is one moment my father used to tell us. If for a second I felt that chill in my spine, and I was like, have I taken the right decision? But then again he was like, no, focus, focus, and bus. उसके बाद उस focus में he says कि I suddenly the capsule hit land, so I had reached. He opened the latch, got out, took the first person, whoever was the nearest, इधर, come here, हाँ, उसको उठाया, डाला लिफ्ट में. He had a hammer for signaling. He signaled, lift him up. वो फर्स्ट आदमी निकल गया. So उस टाइम पहले ये मैनुअल विंचिंग कर रहे थे. They were using a manual winch because Okay. अभी उनको पता नहीं था कि कैसे होगा, स्पीड क्या होगी, कितनी होगी, व्हाट विल बी एबल, कैसे कर सकेंगे, कितने टाइम में निकाल सकेंगे. So that gave him 20 minutes, almost 30 minutes to organize the other 64 people who were left downstairs, down, I'm saying stairs, Mhm. who were left down in the earth. So he first said, okay, now listen, six of you have, six of your people have drowned, and you are 65. One I have sent 64. So tell me if anyone has fever, if anyone got injured during the accident. So he had taken tokens with him from number 1 to number 65. Number 1 chala gaya. Next tokens were given to 7-8 people who were injured and who had fever and were not feeling well. After that, he said ki next, the lowest rank workers will get the next token, and we'll keep rising till we reach the senior most. And when all of you go out, after that I will go out. So, and I don't want to stay here. So listen to me, or be organized. जैसे जैसे आएगा तुम जाते रहोगे. मेरे को भी जाना है, मेरे को यहाँ नहीं रहना, लेकिन मैं तुम सबको भेज के ही जाऊंगा. अगर तुम में से एक भी रह गया तो मैं भी यहीं रहूंगा. So that, sort of gave them a little bit of confidence. कि भाई someone is there who's going to stay with us in this mess for some till Yeah, it's a maybe we are. very, very, it's like, कहते हैं ना, वो एक मुहावरा है, डूबते को तिनके का सहारा. बिल्कुल बिल्कुल. So, though he was not a tinka, he was God sent. I would say he was a God हाँ. sent angel only for them. And उस Yeah, टाइम पे कोई जो बाहर से आया वो तुमको बोले कि भाई I am there with the last man and I'll be बिल्कुल standing here. I think that itself gives you a boost and impetus. Like, बिल्कुल बिल्कुल. बहुत हिम्मत So मिलती है. बिल्कुल. सो वो उन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया उनको. सो अब क्या है कि सिंस मैनुअल बेंचिंग चल रही, तो पहले 3 4 5 जो थे वो मैनुअल बेंच पे, इट वाज टेकिंग 35 Longer 40 time. मिनट. हाँ जी. देन दे सॉ कि इट इज रनिंग स्मूथ नाउ. सो उन्होंने उसको इलेक्ट्रॉनिक विंच पे लगा दिया. वंस द इलेक्ट्रॉनिक विंचिंग स्टार्टेड, तो द फुल सर्कल वाज टेकिंग 5 मिनट्स, ऐसे 7 मिनट्स 5 मिनट्स 7 मिनट्स लग रहे थे. तो वो थोड़ा हम्म. फास्ट हो गया. एंड बल्कि उन्होंने एक उतने टाइम में, ऑफ कोर्स दे स्टार्टेड आस्किंग हिम, सरदार जी, बिकॉज जनरल मैनेजर्स फॉर अ सिंपल वर्कर, a general manager is a person he might see once in his lifetime. So Very he's true. like, तो they were like, सरदार जी आप कहाँ से आए हो? He said, कहाँ से आए हो? मैं ऊपर से आया हूँ. नहीं नहीं नहीं, आप एयरफोर्स से हो, आप नेवी से हो, आप रेस्क्यू स्टेशन से हो. He's like, नहीं, आप कहाँ से आया? He said, देखो ऐसा है कि तुम लोग 3 दिन से पिकनिक कर रहे हो नीचे बैठ के.
मेरे को किसी ने बताया कि वो लोग देखो वहां बैठ के पिकनिक कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार ये अकेले पिकनिक कर रहे हैं, मैं भी चलता हूँ, मैं भी पिकनिक करता हूँ, जस्ट टू बूस्ट देयर मोरल, टू कीप हाँ, देम a little at bit. that time, that sense of humor, that presence of Yes, sense of humor under so much of stress, yes, it's yes, exactly. commendable. हाँ जी, And those people could rampage. They could say कि मैं पहले जाऊंगा. Anyone could have said कि नहीं मैं. और बीच में एक हुआ था. One boy came up to him, said something in his ear, so he broke the line. He said, "Okay, you go next." So everyone asked कि साहब उसको क्यों जाने दिया पहले? He said because वो और उसका रियल ब्रदर दोनों नीचे काम कर रहे थे तुम्हारे साथ। उसमें से एक जो 6 डूबे हैं, उसमें से एक उसका रियल ब्रदर था। तो उसने बोला कि सर मेरे को जाने दो, ऊपर मेरे घर वाले, मेरे पेरेंट्स मेरे को देखेंगे, उनको कुछ तो सांत्वना मिलेगी कि हमारा एक बेटा बाहर आ गया। सो उसको ही वाज अलाउड टू ब्रेक द लाइन एंड गो, बट रेस्ट everyone went as planned. So all 64, 65 were sent out. Now he was left alone in the darkness, the last person. So अब ऊपर से बोर है, बोर के बीच से पत्थर भी गिर रहे हैं, एंड एवरी टाइम ही हैड टू सेट द कैप्सूल, नीचे आ रहा है कैप्सूल, उसको सेट करना है, उसकी दरवाजा खोलना है। सो वो स्टोन्स उनके कभी यहाँ गिर रहे हैं, कभी उनके स्टोन्स यहाँ गिर रहे हैं, पानी गिर रहा है। सो हिज हैंड्स वर ऑल ब्रूज्ड एंड bleeding, his hands were swollen, and but he was standing like in a pile of mud, wet mud, for almost 7 hours, 6 hours, just standing there and setting it up and sending them back. वो करते करते वो जब 65th आदमी चला गया, that was when he said कि I felt कि my life's mission has been accomplished. Now from today onwards, whatever I'm living is God's bonus for me. My life has accomplished. I have accomplished my life's missions. अब इसमें मैम लास्ट मैन ही केम आउट द लास्ट, उसमें थोड़ा सा देयर इज थोड़ा कि उनका हैमर एक्चुअली गिर गया था तो इन दैट मड, बट चलो वो हाथ पैर मारा उन्होंने, मिल गया, एंड देन ही केम आउट। तो इसमें मैम नाउ द थिंग इज व्हेन ही केम आउट देयर वर ऑलमोस्ट 1 lakh people over there. So he was lifted on shoulders, garlands were put on him till they came to his pagadi, and he was sent to his car lifted only. He didn't walk. तो अब उसमें शाम को he went to the hospital जहां पे सबको लेके गया था. By that time उनको पता चल गया था कि GM है, he is a general manager. So as soon as he entered, वो 65 के 65 बेड से उतर के जमीन पर लेट गए, दंडवत। आप जीएम साहब हमारे को बचाने आए, जीएम साहब आए, लेकिन जीएम साहब नहीं आए थे, एक इंसान आया था दूसरे को बचाने के लिए, और उसको भगवान ने भेजा था। मैं खुद कोई मेरे को थोड़ा पता था कि मैं आऊंगा, मैं भी तो सुबह अपने काम पे जा रहा था ना, तो भगवान ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। मेरे को तुमसे मिलना था, तुमको मेरे से मिलना था, इसलिए हम मिले। एंड मैम द ओनली क्वेश्चन इज, if we see the capsule went down empty 65 times after leaving one labor at the top, it went down empty, it would come up again, go down empty for 65 winds. No one had the guts to enter that capsule, go down and say, okay Gil, we will help you, I'll stand with you, or चल 40 हो गए, तू चल, तू आराम कर बाकी ले, हाँ मैं देख लेता हूँ, बाकी हम देखते हैं। क्यों? बिकॉज विद एवरी वाइंड द रिस्क वाज बिकमिंग 2% मोर, विद एवरी वाइंड इट वाज इंक्रीजिंग, विद एवरी वाइंड इट वाज इंक्रीजिंग, एंड एवरीवन न्यू इट। दे वर जस्ट वेटिंग फॉर देम टू डाई, बेसिकली। अब नहीं तो अगले में मरेंगे। या बट बिकॉज जितना बार वो कैप्सूल नीचे जा रहा होगा उतना ही अर्थ डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेस उतनी हो ही रही है, मूवमेंट हो रही है, एंड लाइक बोर यू हैड प्रीवियसली सेड द सीलिंग वाज कोलैप्सिंग, फीलिंग वाज सो दैट कोलैप्सिंग, यस, वाइब्रेशन इट कुड हैव कोलैप्स्ड फास्टर, इट पानी कोलैप्स और जल्दी आ सकता था। exactly 30 hours after the rescue was finished. Everything collapsed. Everything collapsed. It became a crater because 110 feet से 330 feet तक सब कुछ collapse कर गया। तो वो collapse तो करना ही था, that was confirmed कि ये collapse होगा। तो
बिकॉज ऑफ द मैनुअल से वो जो इलेक्ट्रॉनिक कर दिया, वो उनको दैट वाज अ सेवियर. अदरवाइज मे बी वो लास्ट मोमेंट पे दे वुड स्टिल बी देयर. They could have been. So we never know. Now, now that was the way he did it. He saved them, and then So I believe he got other awards also for this. yes, the government of India was they presented him with the highest civilian bravery award of India, which is the Sarvotam Jeevan Raksha Padak. If you can see it there, it's right here. Yes, 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 I can see So it. this was awarded to him in 1991. It's the highest civilian bravery award of India. So for And like I'm, army के लिए परमवीर चक्र है, तो हाँ इनके जी. लिए yeah. And just for people who are with us, I would like to show you the capsule. This Oh my God, that's a माने एक बंदा ही फिट आ सकता है उस कैप्सूल में, बिल्कुल उससे बिल्कुल बिल्कुल. ज्यादा बिल्कुल नहीं. No, no, no. It's just one person fits tightly. A person like my Tightly, dad. yeah. There is no place to move, I think, over No, he there. could not And move. His hands could not and move. His head could not move. His legs could not move. Only the thing was that he had the hammer in his hand, which was like this, and he could yeah. do this. That's it. That's all he could do. Nothing else. So this is the capsule, which is now proudly displayed in the Coal India Museum at Ranchi. Indian Institute of Coal Management है वहाँ पे, और वहाँ पे Coal India का museum है. So this is Mhm. displayed there. And of course, if you look around, there are awards and rewards and मतलब uh, 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 Actual once trophies are those 65 people, like, बिल्कुल 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 whose life he has saved. And I think उनके आने वाली कितनी generations इनको 65 याद people करेंगे mean कि ma'am 65 people engineer. means हाँ, 6,500 people, 65 yeah, very families होती true. It's generations that are going to remember him and thank him for हैं. the जब इनकी life he मूवी has बन lived. when जब just we were talking about the movie also. So Hmm. the movie is now completed. Akshay Kumar is playing my dad's role. And if you This is search one on the movie I'm net, not going to miss. मैं पक्का देखूंगी. so the abhi tentatively they have named it as Capsule Gill. So anyone who wants to search or just goes to Google and you can type Capsule Gill and you'll find out everything about it. So uh, we are waiting very anxiously. The movie has been announced unofficially. Official announcement we are waiting कि शायद अभी इसी week में या next week में. Now, I am also one of those who's waiting for the official announcement. Thank And you, thank you. I promise you, ये movie मैं घर में बिल्कुल नहीं देखूंगी. I'm going to go to the hall. I'm going to buy the tickets and I'm going to see it on big screen. Because And having spoken to you about engineer Jaswant Singh Gill ji, means it will be उनके शान के खिलाफ होगा. I think अगर ये मैं घर में OTT पे बैठ के देखूं. मैं बिल्कुल. अब इसको मैम पक्का मेरी कर ये पाऊंगी. आपके एक प्लेटफॉर्म से एक रिक्वेस्ट भी है कि डोंट सी द एक्टर whoever it is. It could be ABC, whoever who's playing his role. Don't see him. See Jaswant Singh. बिल्कुल, बिल्कुल. And I'm going to be, especially when the movie is going to be announced, I'm going to be proudly displaying that over here on my platform too. And Yes, certainly. Why I not? feel, though he is a recipient, he's an awardee of RNTalks Swami Vivekananda Karmaveera Award. But I think मुझ पे एक फेवर हो रहा है being associated with such a great person who thought beyond his life and had such exemplary courage. And not only that, the sense of humor he had in him till Oh the yes, yes. last. Absolutely. That's a very big thing. माने एक तो होता है बहादुरी, एक होता है अकल के साथ बहादुरी, और एक होता है कि इन सब के साथ आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर मेंटेन करके रखते हैं, knowing the risk factor you've put yourself in, so that the person in front of you is absolutely calm and doesn't panic. उसको कहते हैं हीरो, लाइफ का हीरो. एंड पीपल लाइक जसवंत सिंह जी आर लाइक, आई डाउट
मैंने सदियों में शायद भगवान एक ऐसा हीरो बनाता है, मूवीज में देखा है, शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन कोयले की खान में जा रहे हैं, बट दैट्स ऑल। मेरे को अब वो पिक्चर साइड बाय साइड याद आती, काला पत्थर आई थिंक वाज द नेम, एंड आई थिंक Yes, वो कैप्सूल गिल के Kala, सामने पानी भरता है। ma'am, I'll just share a small fact with you. The Mahabir rescue, जो इसमें my father rescued 65 miners, is the only rescue in the history of mining India. Every other accident has been a disaster because no one could be saved. This is the only example of a mining rescue in India. This was the first time, and till now the last time, that people were actually rescued. The others were all dead. Those were disasters. This is a rescue. The word rescue will be the most important word which will be remembered with whenever this is spoken about. It will never be called the Mahavir disaster. It will always be called the Mahavir rescue. रेस्क्यू। Yes. Although six people died, that's a very tragic thing. But it 65 rescue is it's almost a world record. And he holds the world record. Just just to show you, he holds the world record. This is the world's greatest record. You can see it here, and is another one. This is World Book of Records, and here's Limca. So he holds the national award. See this? ट्रू ट्रू। So well, he and to the time he passed away, like he did not suffer for a single minute. He was walking and totally normal. He had his lunch. He had tea at 5 o'clock. He went to the washroom at 5:15 because that was his routine, and from there God took him. So he did not even ask for a drop of water when he left. I'm I'm speechless. To be putting it in a humorous way, you can say I'm speech loss. I'm suffering from speech loss. Actually, जब आप कहानी बता रहे थे उनकी, I had goosebumps on, रोंगटे खड़े हो रहे थे मेरे, ये सोच के, वो सीन सोच के, क्योंकि मूवीज में तो देखा है, तो थैंक्स टू द मूवीज यू कैन विजुअलाइज, एक पिक्चर हाँ, बनती है दिमाग में, बिल्कुल। and just knowing that person like him, general manager, going down, and very correctly said, 65 times the lift went down. Empty. Nobody had the guts to even volunteer कि तुम बाहर आ जाओ, हम या जाते हम हैं. तुम्हारे साथ चलते हैं. यस, Everybody knew the risk, which was so high. बिल्कुल बिल्कुल. So, So now, ma'am, let's just pray that you know I want that the world should know him, and I've been working on it for the past 14 years. I've spent the last 14 years of my life just के ये इस आदमी को पहचानो, बस बहुत और कुछ जरूरी नहीं. है, सिर्फ और पहचानना ही कुछ नहीं. नहीं. आई थिंक वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम. लाइक Yes, जो उन्होंने एक बार कहा था, यू ओनली गेट टू live for. लिव वन लाइफ, and you need to make it count. And that Yes, is what he had done. He had yes, one life and he made it count. And वो 65 लोगों की generations आगे तक will thank him for that one rescue, that he did not care about his own life and he's gone down. So I think बिल्कुल. हमको उनसे सीख लेनी चाहिए that every life matters, every life, be मैम it a देखो, at that animal. time he was 50 years old. My mom was 47 years old. I'm the eldest. I was 19. My sister was 18. My younger brother was 16. And my youngest sister was 3 years old. It never occurred to him that I have a family.
if something happens to him, वो he said later, कहते मेरे उस टाइम मेरे दिमाग में ये सब नहीं आया. उस टाइम मेरे को सिर्फ एक ही आया कि इनको बचाऊं, इनको लेके आऊं बाहर, और इनको बचाऊं. बाकी लोगों को यही दिमाग में आ रहा था शायद कि मेरी जान खतरे में है, मेरी फैमिली, मेरा घर, मेरा बच्चा. So they could never बिल्कुल. dare to go in, and he was only focused on saving lives. That is the thing. He was asked this question in a number of interviews, and he said कि आपने मिसेस गिल को बताया था. तो he said देखो हमारा एक पैक्ट है कि मैं ऑफिस में क्या करता हूँ वो मुझे कभी नहीं पूछती, वो किचन में क्या करती है मैं उसको कभी नहीं पूछता. So That is again he was, put so brilliantly, like, uh, his one-liners are, in our family, Gil, Gil, Jijaji, Gil Saab, his one-liners are like, remembered 100 times a day because he used to give one-liners and they were like everyone would be splitting and laughing. And, so he was absolutely very humorous, very bright, very brilliant, and of course, a man as a human being, he was. I don't think I can compare another human being with him. definitely not, definitely not. He is, एक पिक्चर में शक्ति कपूर ने कहा था, वन पीस कट पीस. Hmm. मीन्स जब इनको बनाया गया था ना, वन पीस कट पीस, ऊपर वाले ने ना वो सांचा ही तोड़ दिया था कि कुछ भाई, आता तो सांचा ही तोड़ अब ये दिया नहीं कि बने. इसमें एक ही गिल बन सकता है एक और वो बस प्लीज. जसवंत सिंह गिल बन सकते हैं. दैट इज ऑल. उनके आगे माने हर बार ऐसे बनाने भी मुश्किल होते हैं ना. नहीं मैम, ये तो कभी वो मटेरियल नहीं सेंचुरीज भगवान में, इकट्ठा कर पाता. वही भगवान सेंचुरीज के में एक पास ही बार वो ऐसा. मटेरियल कभी कभी आता है. That बिल्कुल. gold dust, I would say that gold dust, यस God यस gets एग्जैक्टली. once in a lifetime, even for him also, that he makes somebody, he creates someone for a purpose, यस. a bigger एंड purpose to दैट be fulfilled. फॉर अ बिग पर्पस. यस, दैट इज राइट. So So that's it. That's the story. And of course, this is all, it's like my saying. I'm sure when we see it on screen, and the director Tinu Desai is a perfectionist. He's the one who directed Rustam, mhm. also Akshay Kumar. Yes, yes, So yes. he is now like a brother, a family. For 5 years, he has been on this project. After Rustam, he did not take up any project because he said, नहीं, जब तक मैं डैडी जी का, he used to call Papa डैडी जी, जब तक मैं डैडी जी का नहीं करूंगा मैं कोई पिक्चर नहीं बनाऊंगा. And he has kept his word. From Rustam, from where Akshay Kumar got his first Best Actor award in his complete career. That was the first time Akshay got the Best Actor award. Tinu Desai got the most promising young new director award. From there till now, he did not touch any other film, although he had hundreds of offers. He said no. जब तक डैडी जी की पिक्चर नहीं बनेगी, तब तक मैं कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं करूंगा. And I And think now, Capsule Gill is the perfect name for the movie. I think that is the uh, perfect name, see, और ये नाम बदलना भी नहीं चाहिए, because that is what that sums is. up everything in a capsule also, like. Ma'am, the name of the movie is secondary. The name is Jaswant Singh Gill. वो गिल लगना बहुत जरूरी है. एंड कैप्सूल जो उन्होंने बनाया था, दैट लाइफ सेविंग. हम लोग तो कैप्सूल्स खाते हैं वही. एंटीबायोटिक्स के हिसाब से, बट ही वाज अ संजीवनी कैप्सूल जिसको कहते हैं ना. बिल्कुल दैट इज बिल्कुल. व्हाट ही इनको हैड क्रिएटेड दैट टाइम. एग्जैक्ट. चलो, बस we are waiting, and very soon, I have worked. I shouldn't. I have, for the first time I'm saying it. I've worked, and this would be the culmination of my work for the last 14 years. The day I see his movie on the screen, I think I would have done something as a son for him. Very true. And I'm so very grateful that you could come over here and give us this interview. It was like everything, and I'm going to take this interview to everybody I can, so that they can know, because when you Google, इतना नहीं मिलता वहां पे जो बारीकियां जो एक एक मिनट टू मिनट का आपने बताया है. दिस इज नॉट बिल्कुल. देयर एंड अवेलेबल. गूगल में बस इतने पता लगता है कि एक्सीडेंट हुआ था, ये आए थे, इन्होंने बचाया था, कैप्सूल वो है, बनाया था. लेकिन if अगर किसी ने ध्यान से देखना हो तो उसमें when you go down to the interviews, there are हम्म. 3 or 4 interviews which he has given in which everything he has said, जो हाँ, हाँ. मैंने आज जो
वो हर चीज उन्होंने बोली है। तो वहां ऑफ तक कोर्स कोई मेरे को जाता ही बोलने, नहीं ना, लोग सीधे नहीं गूगल वहां तक मारते हैं, वो फटाफट ऊपर ऊपर करते हैं, देखने वाला नीचे रेफरेंसेस में कोई नहीं जाता. कोई नहीं जाता। That एग्जैक्टली। is why this interview was a must. That straight from the, I'm again quoting, English में कहावत है ना, straight from the horse's mouth. Straight from the bloodline it is coming, and you यस, being his son, you know everything that happened. So nothing वही। can be more authentic than what you have told me today. And this is our promise that we are going to take it forward to as many people, because I want to be, I'm inspired, but I want many other people to rise before themselves and बिल्कुल। take, एक चीज इनसे कोई एक भी चीज सीख ले तो बहुत होगा. कोई एक आदमी इंस्पायर हो जाए, इट्स बहुत है. बिग, वो बहुत है। कितने की लाइफ बदल सकता है. इन्होंने एक में बिल्कुल, 65,000 की बदल दी, तो कोई एक बिल्कुल, और इंस्पायर हो जाए तो वो कितनी बदल सकता है. बिल्कुल, बिल्कुल। एंड सो दैट, सी मैंने मूवीज बनती हैं वॉर पे, लड़ाई पे, झगड़े पे, मारने पे, काटने पे, झगड़ा, लड़ाई, ये तो बचाने की है. बचाना। मतलब जो एक कहावत है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा। मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम आई थिंक कोई ऐसी मूवी आ रही है जिसमें कि मारने से बचाने वाला बड़ा, और बचाने, इट्स स्टोरी ऑफ अ रेस्क्यू। ट्रू. एंड अ रियल लाइफ रेस्क्यू, नॉट सम यस। क्रिएटिव एनीथिंग, नो, नो, नॉट अ नो, फिक्शन. एक्चुअली इट्स अ इट्स अ रियल लाइफ रेस्क्यू. real life Yes. and it's a documented rescue. Yes. So I thank you so much for being here with me Thank you, today. ma'am. Thank It you, was thank you. absolute pleasure. Same And here. it's our promise that this is going to go very far. हम जहां Thank तक you ले so जा much. सकते हैं, we'll be taking. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Okay, thank you. Okay. Bye bye. So, dear all, that was the story of engineer Jaswant Singh Gill, who rose above himself, above his call of duty. Actually, he was going on duty somewhere, और वहां ना जाके वो कहीं और चले गए जहां उन्होंने अपने आप को खुद को पीछे रखते हुए ही सेव लाइफ ऑफ सो मेनी कोल माइनर्स. ये नहीं देखा कि उनकी लाइफ खतरे में है, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है. And like Dr. Sarpreet Singh Gill said, 65 times वो लिफ्ट नीचे गई, ऊपर आई, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई उस लिफ्ट में घुस सके. So this, if you are watching, kindly please take this story ahead, share this so that we have more people like engineer Jaswant Singh Gill who come forward. आज की दुनिया में ना मारने काटने वाले बहुत भरे पड़े हैं. आप वॉर को ही देख लो, यूक्रेन रशिया की जो वॉर हो रही है, बट बचाने वाले जो सब कुछ साइड में रख के खुद की जान जोखिम में डाल के आगे आ जाते हैं ना, ऐसे लोग बहुत कम है. और हमको आज के दौर में ऐसे जिगरे वाले लोग चाहिए जिनके पास इतना जिगर है जो बचा सके किसी को. सो प्लीज शेयर दिस एंड लेट अस मेक इट इन, एक इसको हम वायरल कर देना चाहिए कि लोग सीखे. एंड वी आर ऑल वेटिंग. मैं आपसे एक और गुजारिश करती हूँ, डॉक्टर सरप्रीत सिंह की भी जो विश है वो मेरी भी विश है, इज लाइक व्हेन यू गो टू सी दिस मूवी कैप्सूल गिल, डोंट लुक एट अक्षय कुमार, लुक एट इंजीनियर जसवंत सिंह गिल. उनकी छवि देखिए और याद करिए उन्होंने क्या किया था, एंड विच वॉज एट दैट टाइम ह्यूमनली इम्पॉसिबल. आज हमारे पास टेक्निक्स है, बहुत टेक्नोलॉजी है, उस टाइम पे ध्यान रखिए इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी. सो the heroic feat that he had achieved, we salute him at RNTalks, and we wish for you people. आप सबसे यही मेरी विनती है कि इस वीडियो को आगे लेके जाए. Let's share it as a tribute to the man who saved so many lives. With this, I'll end my session. Thank you so much. This is Ranjeeta, founder RN Talks, signing off.